Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hi everyone, welcome to Testbook Select. So today we are going to speak about accountancy for EPFO examination. Uh, Let us just wait for a few more minutes and then we'll start. So if you have been to Testbook platform earlier also, you may comment down. Uh, we can greet us together, greet each other. I hope everybody is doing well in Corona times. It is a very difficult time, I know. So you may write down hi or anything, whatever you like. So I could know that you have joined. I wish safe health for everyone in this time, and we wish for a speedy recovery from this era currently. Okay. Okay. So now it's time. I think we should start. So, guys, today we are here to understand how Testbook has launched a course on EPFO, what we are doing in this EPFO examination. Um, my introduction is basically I'm a chartered accountant. My name is Vishambhar Sir. I'm a chartered accountant, and I'll be taking over the accountancy part of EPFO examination on Testbook Select. So uh, this is a very good platform. I mean, all the teachers and everyone has put in a lot of hard work for creating this course. So I hope you will like it. Uh, Hi Anisha, good evening. We can see some comments coming down. Very nice. Okay. So before moving forward, let me just give you a brief introduction about me. My name is Vishambhar, and as I told you that I am a chartered accountant by profession. Currently, I am living in Mumbai. I'm based out at Mumbai, and I'm working with a reputed listed company in Mumbai. And why do I teach? Is because you can say teaching is a passion for me. I like teaching. Hello, Swapnil. Hello. So teaching is a passion for me. I really like teaching, and I really want to help. You can say specifically right now because I am from commerce background, so of course I could help commerce graduates. So my agenda includes helping commerce graduates to grow in their career and path, and that's why I have associated with Testbook. They are doing a great job. Um, so basically, I belong from Jaipur and working simultaneously with my job and all this teaching and everything. Very nice, very nice. Okay, Anisha, very nice. So, before moving forward, let me just give you an overview of what Testbook is doing. Let us just see what they are doing, and then we'll move on to the paper pattern of EPFO. What the previous questions were asked, and just to remind you one thing that EPFO paper is also in Hindi and English. So we'll discuss it over. So let's start with the first thing that what Testbook Select has come up with for you all. So Testbook Select has come up with a UPSC EPFO live coaching, wherein all the teachers are ready with their content and everything. There are 380 plus live classes, 275 practice slides, and 160 plus PDF notes, etc., etc. So a lot of work has been put in already, and you can just go ahead and sign up, or you can talk to her, talk to the
student counselors. You can take help from them. They'll push you also. It's a very good website, very good company as such. So that's what they have done. Secondly, you can visit this link www.testbook.com/u.epfo if you directly want to visit the EPFO course. Okay. Chaliye, welcome back. So now we want to start with what we are going to do in accountancy for EPFO in this course and what we exactly do. So let us first of all understand the paper. What is the paper pattern and everything? Okay. So they give first of all, one thing I must tell you: this course would be a bilingual course, which means that I'll be speaking in Hindi and English both, right? ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में बात करेंगे, राइट? सो जस्ट फॉर अ हेड्स अप. अच्छा, लेट्स मूव ऑन. विल स्टार्ट विद द ईपीएफओ पेपर पैटर्न. So basically देखिए हम लोग accountancy right now I am just looking over the accountancy part of the CPF examination, so I'm going to give you an overview of the accountancy part. Okay, so accountancy में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? I have given you a basic definition of accountancy. जो लोग accountancy नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने ये दिया है कि accountancy is basically nothing but keeping record of your income and expense and asset and liabilities so that you can see where your correct position is. That's what basically accountancy is. Okay. Now इस पे हम लोग बाद में आएंगे. पेपर पैटर्न हम लोग डिस्कस पहले करेंगे. तो पेपर पैटर्न में देखिए जो 2017 में एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोजीशंस निकली थी उसके अंदर पेपर पैटर्न ऐसा रहा है. तो बेसिकली 100 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे, राइट? दिस वॉज द सेम पेपर विच इज फॉर एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटिंग ऑफिसर, जो पहले निकली थी पोजीशन 2017 में जो पेपर हुआ है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ. उसके बाद 2018 में जो निकला है दैट इज फॉर लेबर ऑफिसर. 2014-15 वो अलग अलग पोजीशंस के लिए निकले हैं, राइट? आई बिलीव आप लोगों को पता होगा, बट 2017 में सेम पोजीशन निकली थी और उसके पेपर पैटर्न का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, राइट? Okay, we'll take your questions as well. Let us just first of all give you an brief of what this is. Okay, EPFO and UPSC. We'll come back to your comments. So please hold on to us. Okay, चलिए. So EPFO की सबसे पहले 2017 में पोजीशंस निकली और उसके अंदर पेपर आया था 100 मार्क्स का, 120 क्वेश्चंस. उसका ब्रेकअप ऐसा है, देखिए इसमें दो पार्ट में पेपर आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो पार्ट ए इज बेसिकली 26 क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स ईच होता है. ये आपको पेपर में स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं मिलेगा 1 मार्क्स ईच, बट व्हेन यू कैलकुलेट द नंबर टोटल यू कैन अंडरस्टैंड इट. तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है फर्स्ट पार्ट ए एंड देन 37 क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट में है, पार्ट बी में, दैट इज 2 मार्क्स ईच, राइट? और पिछले पेपर में ये देखा गया कि पार्ट ए सिर्फ इंग्लिश में था और पार्ट बी हिंदी इंग्लिश दोनों में था. तो इट्स गुड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश बोथ, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा बिकॉज पहले पेपर में ऐसा हो चुका है. और फिर उसके बाद देखिए अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चंस थे वो आए इसमें क्वेश्चन नंबर 56 से 70, यानी अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस अकाउंटेंसी पे आए थे, राइट? तो 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, यानी कि 30 मार्क्स का पेपर is based on accountancy because the enforcement officer needs to have a substantial amount of accounting knowledge to apply it basically practically, right?
जब हम लोग प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में काम करते हैं एंड वी फेस द एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड अकाउंट ऑफिसर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आते हैं, देन if they know it, if they know the accountancy and books and they can read it, it's very good for them, and अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ईजी हो जाती है उनके लिए। तो इसलिए अकाउंटेंसी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चंस हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे। आई बिलीव इन द कमिंग टाइम दैट इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 15 टू, बट ऐसा फिक्स नहीं है देखिए कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो आई बिलीव 15 अप्रॉक्स क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए, बिकॉज 30% से 35% तक का वेटेज अकाउंटेंसी का होता है, राइट। ये बहुत ज़रूरी है उन पोजीशंस के लिए। नाउ देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। सो नेगेटिव मार्किंग ऐसी है कि 1/3, अगर आपने एक नंबर का क्वेश्चन गलत किया है तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो अगर लेट्स से आपने पार्ट ए में से गलती की तो वो एक नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें से आपका 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने पार्ट बी में गलती कर दी तो 0.66 मार्क आपका डिडक्ट होगा। सिंपल एज दैट। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, अब इसमें देखिए कोर्स में कवर क्या क्या होता है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो कोर्स में इनका जो कोर्स है, जब हमने क्वेश्चंस को एनालाइज किया है तो क्वेश्चंस हैज कम अप फ्रॉम स्टार्टिंग बेसिक्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड दे हैव मूव्ड अप टू द ग्रेजुएशन लेवल इटसेल्फ। यानी कि जो अकाउंटेंसी जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, दे नो ऑलरेडी दैट 11th का कोर्स, 12th का कोर्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कोर्स अलग अलग होता है। बट व्हाट दे हैव डन इज they have collated all the questions from various chapters which are covered in 11th, 12th, first year, second year, और सबसे मिक्स करके उन्होंने क्वेश्चन का पेपर पैटर्न बनाया है। ओके, सो आई वुड से कि एक कोर्स इज लेंदी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। आई वुड नॉट से बहुत ईजी, यू कैन से लोअर इंटरमीडिएट लेवल के हैं। तो इजी है क्वेश्चन, यू कैन अटेम्प्ट इट। जिन लोगों ने पहले अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है बट नीड अ फ्रेशर, बिकॉज यू नो इट हैपन्स व्हेन जब हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो 11th क्लास के बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ऑल वो चीज़ें आसानी से इतनी याद नहीं रहती। और वो उन्होंने इतने इजी क्वेश्चंस भी नहीं पूछे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें, थोड़े से ट्रिकी भी हैं, राइट। तो आई वुड से इट इज़ एन इंटरमीडिएट लेवल। तो इसलिए यू मस्ट review everything starting from 11 to graduation level. तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ कोर्स जिसके अंदर हमने बहुत सारे चैप्टर्स रखे हैं 11th, 12th एंड ग्रेजुएशन का पार्ट मिक्स करके इस एग्जामिनेशन के लिए या टेस्ट बुक सेलेक्ट में फॉर यू ऑल। तो विच विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम अकाउंटेंसी, जो कि इसमें मैक्सिमम कवरेज हो सकता है। दैट्स व्हाट वी हैव टेकन। ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कंटेंट एंड आपको वो क्या करना है, बिकॉज प्रैक्टिस। अब मैं आपको बस एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि जो लोग कॉमर्स के नहीं हैं तो मैं उनको ऐसा बता देता हूँ कि इफ़ यू नो द कंसेप्ट, राइट, अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चंस में क्या होता है, 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 इज द इजी लेवल, यानी कि बिगिनर लेवल। नंबर 2 इज इंटरमीडिएट लेवल। नंबर 3 इज प्रोफेशनल लेवल, जो कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ईपीएफओ पेपर के पैटर्न में वी हैव सीन के क्वेश्चंस आर, यू कैन से 50% ऑन अ इंटरमीडिएट लेवल एंड 50% ऑन अ इजी लेवल। तो प्रोफेशनल लेवल तक ऐसे कोई नहीं गया है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिन लोगों ने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी हुई है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। आपको अगर अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल भी नहीं पता है तो वी हैव स्टार्टेड कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाती है, बेसिक लेजर्स क्या होते हैं, राइट। तो वी हैव कवर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू यू कैन से this debit credit rules, personal real nominal accounts, then trial balance, ledgers, everything we have covered, right, from the basics. And after that, we have covered partnership, etc., etc., all the required chapters. That's what we have covered. Acha, there's one more thing to discuss about, that accountancy में mainly I would say broadly 3 branches होती हैं।
एक तो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों पे ही बेस्ड क्वेश्चन देखे गए हैं पेपर, राइट? सो वी हैव कवर्ड सम पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल, टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, ताकि अकाउंटेंसी में कोई चीज़ छूटे नहीं, राइट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ नहीं आता बिकॉज इट इज़ अ हायर लेवल थिंग, तो उससे रिलेटेड कुछ देखा नहीं गया. बट कॉस्ट अकाउंटिंग, ओवरहेड रिलेटेड क्वेश्चंस आई हैव सीन, वी बिलीव कि वो आएंगे ही आएंगे. और वो जब हम, यू कैन से कि जब आप लोग लेट्स से एनफोर्समेंट ऑफिसर्स बन जाएंगे, अकाउंट ऑफिसर्स बन जाएंगे, तो व्हेन यू सी द रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज, तो यू मस्ट नो मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स बनते कैसे हैं, उसमें ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए उसमें कॉस्टिंग का पार्ट डाला है, राइट? So this is, I would say, the coverage which we have done in this. Now moving forward, अच्छा, अब एग्जाम में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर थोड़े से लिस्ट डाउन किए हैं बिकॉज इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट? इवन दो वी हैव कवर्ड मोर देन दिस, बट इन पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो जैसे सबसे पहला इन्होंने जो अपना आपने वो देखा होगा इनका सिलेबस, तो सिलेबस में भी आपने देखा होगा कि दे हैव रिटन ओनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बट पेपर में केवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, इट हैज कवर्ड एवरीथिंग, राइट, फ्रॉम जीरो टू टॉप. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो आने ही आने हैं, उस पर क्वेश्चन आए ही हैं, बट उसके अलावा भी इन्होंने कवरेज किया है. तो देखिए कुछ एक चीज़ें जो बेसिक हैं, जो हर कंपनी में लागू होती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन, राइट? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है हमारे, कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, हम बात करें तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है, कैपिटल असेट क्या होते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, इन्वेंट्री क्या होती है. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर इंसान को पता होनी चाहिए कि अरे इन्वेंट्री तो इसी मेथड से होती है, राइट? तो ये बेसिक चीज़ें एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ऑफकोर्स उन लोगों को तो पता होनी चाहिए, इसलिए इन पे बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, राइट? फिर उसके अलावा अब डिफरेंट टाइप की कंपनीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जब आप कम डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी आई वुड से, बिकॉज जब आप जॉब करने लगते हैं तो यूल फेस कि अरे ये तो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, देयर इज अ लिस्टेड कंपनी, इट इज़ अ पार्टनरशिप फर्म, इट इज़ अ प्रोपराइटरशिप फर्म. तो बहुत तरह की एंटिटीज होती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, तो सब पे लेबर कंप्लाइंसेस हैं. अब आपको एंटिटीज और उनकी अकाउंटिंग सेपरेटली समझनी ज़रूरी है. तो अब एंटिटीज में भी फिर इंटरनली थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कंसाइनमेंट कर रखे हैं, जॉइंट वेंचर्स कर रखे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये बहुत बड़े टर्म्स नाम से ऐसे लगते होंगे, बट ईजी हैं, बहुत कोई मुश्किल नहीं है. तो देखिए पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं. तो ये चैप्टर्स हमें कवर करने ही करने हैं. दिस इज बेसिक्स. तो बेसिक्स से हम लोग स्टार्ट करके सब चीज़ें कवर कर लेंगे, बट आप ये मानिए इसके आगे भी क्वेश्चन आएंगे. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप में एक चीज़ को लेके क्वेश्चन आ गया तो पार्टनरशिप में दूसरे पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं बनेगा. तो पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप, इट इज़ ह्यूज कंसेप्ट. ट्वेल्थ में कॉमर्स स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी ट्वेल्थ में, तो इट इज़ अ वन सेक्शन ऑफ अ बुक, तो सब चीज़ें कवर हो सकती हैं. तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें सबका पता होना चाहिए. एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, we should cover the basics and an intermediate level of questions for each and every topic and revise it timely. तो हम आपको क्या है क्लास के बीच में रिवीजन भी करा देंगे. तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी कीप ऑन रिवाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्नड इन द पास्ट, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं. इट विल नॉट फ्लो आउट ऑफ योर माइंड. तो कभी आप मे बी आपने कॉमर्स नहीं भी पढ़ा है, तब भी आपको क्वेश्चन हिट हो जाएंगे इजीली, राइट? अच्छा, कुछ एक छोटे मोटे कंसेप्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट होता है, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट्स, राइट? ये हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं, बट ये कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन अभी भी आते हैं. तो ये छोटी मोटी चीज़ें भी मैंने एक अलग से इसमें कोर्स में पुट इन करी हैं, ताकि कहीं पे कोई मिसिंग पार्ट ना रह जाए. ओके, तो this was the paper pattern which we have tried to cover,
and tomorrow also will come the same time at 7 o'clock and we'll start with one of the point वो हम कल ही डिस्कस करेंगे कल हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं आज मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा ओके अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए देखिए मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आई वुड सजेस्ट क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोग जब श्योर हैं तभी आप अटेम्प्ट करिए उसको राइट बिकॉज अकाउंटेंसी इज व्हाट आइदर अ क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर निकल आएगा तो आंसर निकल आएगा तो चार में से ऑप्टिकल सॉरी उसके चार आंसर वो होंगे चार आंसर्स में से आप सेलेक्ट करके आपको पता लग जाएगा अच्छा ये आंसर आ रहा है तो दिस इज देयर तो यू कैन इजीली सेलेक्ट इट बट अगर आंसर आपको मैच नहीं हो रहा किसी से भी तो प्लीज़ तुक्का मत लगाइएगा आई वुड नॉट सजेस्ट प्लीज़ डोंट डू इट और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए आंसर शीट ओएमआर में आती है तो यू नो एक गलती कई स्टूडेंट्स करते हैं वो कि ये करते हैं कि पहले क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेते हैं और उसके बाद ओएमआर में दे वांट टू फिल इट ऑल टुगेदर एक साथ वो कभी नहीं हो पाता है टाइम खत्म हो जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे राइट पूरा पेपर छूट सकता है तो जैसे ही आपने एक क्वेश्चन किया उसको ब्लैकआउट करना बहुत ज़रूरी है ओएमआर शीट तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग वैसे तो आप लोगों को पता होगा बट आई जस्ट थॉट कि एक बार बता देना ठीक है बिशन जी डाउट पूछ रहे हैं सर बिल्कुल आपके डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगा जस्ट 5 मिनट्स मोर हमने थोड़ा सा कवर कर दिया है ओके इंग्लिश में I'll come back in English also for Mr. Jyoti so देखिए in the EPFO examination I'll come to the points okay just let me finish this up I'll take all the questions okay so okay this EPFO paper pattern we have covered now what we are going to do because the paper they have covered they have taken questions from 11th 12th and all the graduation part right so the I can understand that they have taken a large base but we cannot leave anything we have to learn everything right so I have tried to cover everything in this so at least you must understand the basics of everything so that you'll be able to um, attempt the question that's what it is right कोई ऐसा will we won't try to leave a link or something so that we are not able to attempt a question अगर बिल्कुल ही out of the league जा रहा है तो of course we'll leave it but I believe what the paper we have covered because over the past years of experience I have understood what should be taken on that basis only we have covered so we have covered all the topics starting from scratch if somebody doesn't know accountancy for them also it is easy to understand and there are practice questions and there are regular revisions this would be the strategy which is going to be in the classes okay now how to attempt it's a simple thing it's a 120 minutes examination I would suggest don't give 1 or 1.5 minute more than 1.5 minute to any question allocate your time fairly well 2 number wale questions jo hain the questions which are for 2 marks each give more time to them and 1 marks each give less time to them that's a simple thing attempt only when sure and simultaneously please mark in your OMR sheet that is important so this is the basic overview and what we are going to do in the paper and the coaching classes which we are launching through Testbook Select and what should be your strategy. The basics I have covered. Now we'll go ahead and take the questions of every student. Let me just have a look at all of them. And okay, now everybody can ask their questions, please. So okay, let me start from the beginning. Okay, from Swapnil is from Pharma. So Swapnil, I've told you that how we are going to do is we are starting from scratch. So acha, there's one more point to everyone. So anybody, if
they are giving, let's say there are students who are giving multiple government exams, right? So you are giving EPFO examination as well, maybe some other examination as well, where you need accountancy uh, for that examination. So this course will be beneficial for you there also. Okay, how we have started? We have started from scratch, from the zero level. Just assuming that you don't know anything about accountancy, you are starting from the beginning. We have started from that point, and then we have taken up to each and every level. But just understand one thing, please, guys, that understanding accounting from the zero level, it's not difficult. It is easy, but it needs practice. If you leave practice, you will not be able to catch up the next session. That's very important. So just one request from you all: you can take it. You will understand the concepts, no problem. Uh, Even a non-commerce graduate can understand. It's easy, but you need to practice. Just one request. Okay. So Swapnil, I believe I have answered your question. Then Mr. Bishal was asking some question. UPSC Civil Service exam. Okay. CGL Finance optional paper. Anisha, I need more clarity on what is CGL Finance optional paper. EPFO and UPSC Civil Service examination. No, Mr. Bishan, EPFO and UPSC both the examination. The paper is different. This EPFO they have launched. You can say they have uh, the posts are out for enforcement officer, right? So enforcement officer, it is through UPSC, but the posts are for enforcement officer. And UPSC civil service examination, I believe you are talking about IAS. So IAS is a separate examination. This is for enforcement officer. Okay. Ms. Jyoti, preparing now. Which book is best for accounts and economy? Um, Mr. Jyoti, I can guide you in accounts. First of all, I would say if you're going for this paper or maybe any other paper, the content which will provide you will cover all the topics. I mean, maximum of the topics will cover, will touch point each and everything, right? So this would be enough for your understanding. But still, if you want a reference book for accountancy, for EPFO examination, I would say go for Tulsian's. Tulsian is a good book. It will cover everything. But in graduation, there are different books. So I would suggest take Tulsian. There was a version of Tulsian which covers graduation also and others. You can go for that. Okay, Mr. Vishal, thank you. Uh, please, level. Okay, Mr. Bishan is asking the level of both the examination. No, Mr. Bishan, EPFO examination would be comparatively easy, right? This EPFO examination would be comparatively lot easier than the UPSC IAS exams. Okay, so not at all. Okay, now Anisha was asking something. Okay, so for Mr. Jyoti, I would suggest that before joining, please connect with our counselors because the course is in bilingual language. I mean, we'll be speaking in Hindi in between. Just like अभी मैं हिंदी में भी बात कर रहा था in English also. So it is a bilingual thing. So we will speak in Hindi also. So please connect with the student counselors. If you want only English, they'll guide you for that. Attempt is important or else correct is important. See, correct answer is important because you are losing marks. Now, Anisha, I would say
when what will happen is when you're giving your paper, okay, so you have to self evaluate at that time how much confident you feel at that time, right? If you feel confident enough that you have done 90% correct answers, but 10 are only leaving are left behind which you don't know, then in that 10 cases you can maybe five, in the five best you can take the chances. I would not say take the chances for all the 10, but five best, so that you can calculate the numbers, right? That 90 questions you have attempted, you are confident that okay, 90% I'm correct, so this much number I will get, numbers I will get in total from these, and approximate, just an approximation. And if I do wrong five questions, then this much will be deducted. So you can calculate that at that time. It is a quick calculation you have to do in your mind. We used to do it when we attempted our question papers. So attempt is not important because there is a negative marking. Try to attempt correct. Tomorrow is start according for curriculum. Amresh, I'm sorry I couldn't understand your question. Tomorrow is start according for curriculum. I'm sorry. And how to study labor laws? Please connect with our counseling team. They have a teacher for labor laws. They'll guide you on it. Nidish, please. Syllabus. Now, guys, syllabus. Akhil is asking for syllabus. I've told you guys, syllabus is basically syllabus says only accounting principles, general principles of accounting, but it's not the actual syllabus. They have covered everything in the question paper. So please don't go for the syllabus only. Namika, the schedule does not have a social security course. I'm sorry. Please connect with the counseling team. Please call on our textbook helpline. They'll be able to help you with this. Okay. So Anamika, for this social security course, please call the textbook line, textbook numbers. They'll give you an understanding. If you, even if after that you don't get a resolution, please put a comment there. Tomorrow we'll be joining same time, 7 o'clock. Please put a comment there if you don't get the resolution. I'll help you with this. Okay, I'll connect with the team backend and I'll understand. I'll give you a report on that. Okay. Ravinder Singh, NU, I'm sorry, please be more specific in detail. Numerical portion. Okay. So, Ravinder, numerical portion, you're talking about maths, I suppose. There would be a teacher for mathematics also. But before everything, please connect all the student counselors, our textbook team, understand everything what they're giving you. Okay, they'll tell you that what portion they'll cover, what is what and what not. So I believe there'll be a teacher for maths as well, mathematics as well. It's a separate course, separate subject altogether. So of course it will be covered. How much help can I get through the IPCC preparation? Okay, Saurabh, if you have done IPCC, I believe you'll be able to do it easily, the accountancy part. But others, just like general knowledge and everything, history and right. So you might need help on that. For accountancy part, you can, I believe, if you have done IPCC, then you can easily crack it. It's not much of a difficulty. Any sort of cutoff in the previous year, cutoff I have to check, Anisha. I'm sorry. I'll get back to you on this tomorrow. I'll write it down. Okay. So guys, I believe that's all comments. Saurabh, I'll take your comment after this. That is okay. I'll give a answer to Saurabh problem also. So Saurabh, uh, you have failed 8 times in IPCC. That's why you're preparing for government exams. No problem. Of course, go ahead and do it.
It's not like a end of the life even if we fail. Well, if I talk about myself, Saurav, I have failed 4 times in CA finals. I mean, I've completed in fourth attempt, so big deal. It happens. Don't worry, just focus, and you'll be able to do it. Even if you try IPCC, you'll be able to do it. Just fresh start fresh, okay, and try changing a center also. That's a my technique, okay, might help you. Just go for a small center, just like a small city, okay. Amresh, whatever teach in class sufficient to crack exam? Yes, Amresh, you don't worry about accountancy. I'm confident enough. Whatever we'll teach in class, if you're a commerce graduate, you may not be able to need go back and learn everything. I mean, prepare for everything. But if you're a non-commerce graduate, I would just suggest that just do the practice of what we are giving in class. That's more than enough. General category, okay. Niche, Anamika, okay. Thank you, Anamika, for the insights. SSC, political history and economics portion uh, should be studied in depth. See, if you have political history and economics. I am not the subject matter expert on that. So, Arunma, I would suggest please connect to the student counselors, our team. They'll be able to help you better. They have will be having separate sessions for um, political history and economics and etc. You can ask them, those teachers. I am not the correct person. Sushil is asking SSC, CHSL, NTPC group. Acha, all together exam. Okay. Uh, Sushil, actually, your question is not very clear to me. Please be more specific. Are the dates colliding together? Dates अगर एक साथ हो रही हैं तो how would you do it? Thank you, Saurabh. Thank you, everyone. BTech student Amresh, no problem. You can learn it. It's not difficult. Accountancy is not at all difficult. We'll start with scratch. Anisha Das. Okay. Okay, Jyoti. Jyoti, please visit the textbook website. But I would re-emphasize if you want to just, if you can understand only English, this is a bilingual course. I'm really sorry, but please speak to the team, our textbook team. Okay, you can go to visit the website. Yes, political history and everything is planned, Anisha. So just visit the textbook website. You'll see the plan and everything. You can call them and ask everything. Okay, so we have planned for history, etc., etc., and they should be. My next class is tomorrow, 7 p.m. Okay, tomorrow will be here. I have not disclosed the topic. We'll take it up tomorrow directly. Okay, we'll try to solve some questions. Swapnil. Oh, thank you, Swapnil. Thank you so much. So, guys, I believe all the comments have been answered. Thank you so much for patient listening, and we'll meet tomorrow, 7 o'clock. I hope you all would be there. Thank you. Thank you so much. Bye bye.